Good morning students, welcome to Commerce Campus Odisha. Today we will start with the remaining part of negotiable instrument, that is material alteration. Material alteration ro meaning kona? Any material alteration of a negotiable instrument renders the same void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties. कौन बहुत किसी जिनस कहीदेला है एटा कहूँ सी कार इंट्रोडक्शन दौनी सडनली का गोटे आन दौर कौन आर कौन है फोन भांगीगला सी देला देला कौन जहाँ भी करदेला फोन आउे खराब होगा तो मटेरियल अल्टरेशन मटेरियल अल्टरेशन मीनिंग कौन तो इंडिविजुअल बेसिस मटेरियल अल्टरेशन मीनिंग देन हम देखबा तार फाइन a material alteration is one which varies the rights, number one, liabilities, legal position of the parties as ascertained by the deeds in its original state or otherwise varies the legal effects of the instrument as originally expressed or which may otherwise prejudice the party bound by the deed as originally executed. Material alteration रो सबुडु simplest meaning होची माने जहां भी गोटे material aspect अछि ते सबुडु most important aspect of the contract जहां भी अछि सेटा किछि changes हला सेटा किछि alterations हला तो से कोन होची a material alteration जोटा कि नंबर 1 हो rights नंबर 2 हो liabilities नंबर 3 होची legal position of the parties जति कि भी parties अछन से मानको legal position कोन होची ascertain होची केमिति ascertain होची ना by the deeds in its original state or otherwise varies the legal effects of the instruments as originally expressed केमिति vary होची ना तार original state रो केमिति होचा legal effects of the instrument change करला पर्यंत पळोची माने देखो से कोन होची फर्स्ट थिंग होची हमें कॉन्ट्रैक्ट करला बेलको माने नेगोशिएशन गुटी ये करला बेलको हमें फिक्स करथिलो कोन जदी से पैसा ए टाइम रे दबनी त टिके पेनल्टी पकेबा एडा गुटे फर्स्ट लीगल एप्लीकेशन सेकेंड रे कोन हला जानछ ना जेतला हमें मटेरियल अल्टरेशन करूछु एडी त हमें कोन करछु एडी तार लीगल एस्पेक्ट चेंज कर दोछु माने केमिति ना फर्स्ट हमें कहलु कि पेनल्टी पड़िबो बट सेकेंड केस रे हमें कोन करछु ना हमें कहछु कोन ना एथरे जदी से पैसा देला तो केस एडी कोन चेंज होछि लीगल एस्पेक्ट चेंज होछि तो इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल एस्पेक्ट ना ना मटेरियल अल्टरेशन हला ना नहीं बुझ पाछो तो as originally expressed. Okay, voice stability. Is it clear now? Okay, fine, thank you. So, as originally expressed or which may otherwise prejudice the party. कौन होची? First thing legal aspect change करिवो. Second होची which may otherwise prejudice the party. Prejudice माने कौन? Effect पकेवो को party ऊपरे ना party bound by the deed as originally executed. से कौन होची? Please underline originally executed party. जो भी पार्टी अच्छी से पार्टी रो जहाँ भी ओरिजिनल एग्जीक्यूशन वगैरह थिबो से ओरिजिनल एग्जीक्यूशन जहाँ भी हेची से पार्टी जहाँ भी डीड्स अच्छी से पार्टी रो डीड्स भी से कौन करियो सेटा भी इफेक्ट पकेबो तो एट इज सेटा पॉइंट करला प्लीज राइट डाउन मटेरियल अल्टरेशन तो मटेरियल अल्टरेशन रे किंदा जिंस होची मु ब्रेक डाउन करके ताको इजी सेंटेंस रे लिखुची फर्स्ट थिंग होची change in rights, change in rights, liabilities, change in rights, liabilities, legal position or legal position or parties involved कौन करछि फर्स्ट पॉइंट रे से कि चेंज इन राइट्स लायबिलिटीज एंड लीगल पोजीशन
parties involved. Second case में से कौन कौन सी change in legal consequences. Change in legal consequences. Change in legal consequences. Consequences माने कौन? Legal right जहाँ भी legal result नहीं था ना सेड़ा change करची. Legal consequences of what? Of instruments. Change in legal consequences of instruments. Change in third thing कौन change करची? Change in से जहाँ भी 9 पॉइंट्स से देइछि देखो एग्जांपल्स रे 9 पॉइंट्स जहाँ भी से देइछि एवरीथिंग इज अ केस लॉ ईच इंडिविजुअल थिंग इज अ केस लॉ हियर ठीक है चेक आउट करो कौन कौन अच्छे से भितरे 9 पॉइंट्स रे देखो 9 पॉइंट से अछि 9 पॉइंट से फर्स्ट थिंग से कोइ छी अल्टरेशन ऑफ एन ऑर्डर चेक टू अ बियरर चेक एक्सेप्ट बाय और विद द कंसेंट ऑफ द ड्रॉयर तो ये अंडरलाइन करो ऑर्डर चेक को से कन्वर्ट करला बियरर चेक को ऑर्डर चेक को से कन्वर्ट करला बियरर चेक को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर चेक और बियरर चेक रो डिफरेंस कोन कोई परिया जहां भी कोई परिया आंसर जस्ट ट्राई ऑर्डर चेक और बियरर चेक रो डिफरेंस कोन सुबुची एबे वॉइस जे भी लाइव रे अच्छा सुबुची की प्लीज लेट मी नो ओके थैंक यू तो ऑर्डर चेक और बियरर चेक रो डिफरेंस कोन ऑर्डर चेक माने कोन आमे जेतोळे जे कि सेटा कोन से कोन एनकैश करि परियो बट बियरर चेक माने व्हाट इज अ बियरर चेक डेटेड थिबो सेटा बुझिला ना पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम भितर आगे सेटा कोन करे अछि एनकैश करिवार अछि इट्स अ बेसिक डिफरेंस दैट तो अंडरलाइन करो ऑर्डर चेक को बियरर चेक कन्वर्ट करबा होछि मटेरियल अल्टरेशन तमरा जेति की भी एग्जांपल्स अछि से भितर तमरा केमिति क्वेश्चन आसीबो तमको से पचरिबो एटा मटेरियल अल्टरेशन ना नै यू हैव टू आंसर दैट देन से कुछ अल्टरेशन बाय tearing material part of the instrument please underline tearing material part of the instrument जान जानी की जोड़ी ना थिबो पैसा से सेठी चिरा चिरी टिके कर देछ एटा मटेरियल अल्टरेशन ना नै एटा होचे बाया काम प्लस मटेरियल अल्टरेशन tearing the material part of the instrument tearing the material part of the instrument तापर अंडरलाइन करो erasing account payee crossing erasing account payee crossing erasing account payee crossing erasing account payee crossing माने से कोन कहूची जहां भी क्रॉसिंग वगैरह थिबो क्रॉसिंग रो मीनिंग मु बुझेइथिली माने दीरा जिंस भितर नाडा लिखाइ थिबो तो से जहां भी ना अछि सेडा मध्य से इरेज कर दोछ तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम देयर देन से कोन कहूची affixing stamps without the promiser's knowledge affixing stamps without the promiser's knowledge जे भी प्रॉमिसर अछि तार किछि भी नॉलेज न थाई गिरी से कोन करछि स्टैम्प लगी दोछि एनी स्टैम्प विदाउट द प्रॉमिसर्स नॉलेज
जदि से प्रोमिसर को कही था ना देन से स्टैंप लगेले मध्य सेटा मटेरियल अल्टरेशन नहीं बट जदि से प्रोमिसर को कहूनी तथापि स्टैंप लगे दोची तो दैट वुड अमाउंट टू व्हाट मटेरियल अल्टरेशन देन से कुछ अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट प्लीज अंडरलाइन डेट ऑफ पेमेंट चेंज कर दोची देन आसी हमर टाइम ऑफ पेमेंट देन आसी हमर टाइम ऑफ पेमेंट देन प्लेस ऑफ पेमेंट एजा सब इंपोर्टेंट माने इंपोर्टेंट एस्पेक्ट तो से जो चेंज करले मटेरियल अल्टरेशन हैला देन से कुछ अल्टरेशन ऑफ सम पेएबल पैसा जहां भी पेमेंट करियो छै तार जदी से किछि अल्टरेशन कर दो सम पेएबल अल्टरेशन बाय एडिंग न्यू पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट काउट इन्वॉल्व कर दो हैला पार्टी तमे करछो तमु किछि न कहि कि से कोन आ का गोटे डाकी देला से मटेरियल चेंजेस हैला ना नहीं हैला एबे जदी देखो सी जदि का डाकी न थांदा से कहि थांदा कि मते टिके एक्स्ट्रा गुटे स्वीट दरकार तो मे भी सेडा गुटे मैनेजेबल चेंज हे थांदा बट से सिमिति कोनी से आउ जण को आन दोस तो पूरा पूरी मी लगा गुटे एक्स्ट्रा हे जोछ तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट चेंजेस हियर मटेरियल अल्टरेशन रो मीनिंग कोन किछि भी इंपोर्टेंट जिंस चेंज हेबार त पाखरे लिखि दे पारियो शॉर्टकट रे changing any important changing any important aspect this is material alteration देखो देन अल्टरेशन बाय टियरिंग मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एटा ऑलरेडी से दे दीची रिपीट कर दीची एडी अल्टरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लीज अंडरलाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडरलाइन करो एडी इंटरेस्ट जहां भी रेट परसेंटेज अछि सेटा गोटे जिंस डिस्कस हेतिला आ गोटे जिंस होछ सेटा चेंज करले मध्ये सेटा मटेरियल अल्टरेशन तापर जो अछि डिस्कशन तळे सेटा होछि इंपोर्टेंट जिंस प्लीज मार्क इट इंपोर्टेंट मु कहूँ जी जिनस दरकार से जहाँ कही दौची आ बाकी जिनस मु अननेसेसरी डिस्कस करूनी हैला बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कोन हाईलाइट करूची तो प्लीज मार्क इट डाउन पेज नंबर 134 से कहिची अल्टरेशन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्लीज अंडरलाइन बिफोर कंप्लीशन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हेबा आगरे से कोन करची इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हेबा आगरे किछि भी अल्टरेशन आन दोची किछि भी चेंजेस आन दोची तो दिस इज मटेरियल अल्टरेशन then se koi crossing of an open check or conversion of general crossing into special crossing हैला एटा कोन कहू से crossing number 1 मार्क करो तापर से कहू conversion of general crossing into special crossing number 2 general crossing special crossing मु कहितली मीनिंग के कहि परियो एनीवन हियर general crossing special crossing general very good तो सेडा कोड जनरल ना स्पेशल पर्सन आ जनरल क्लासिंग बैंक नाम मेंशन बिकॉज़ एडी they can particularly encash with the bank plan so बैंक को से बैंक हमने गुड बैंक में मेंशन की चीज है देखो alteration before the completion of the instrument completion of the instrument means what before expiry period before expiry period that is which one crossing of an open check or conversion of general crossing into special crossing completely normal crossing conversion making qualified acceptance माने कौन please write down accepting after imposing accepting after imposing a condition accepting after imposing a condition
accepting after imposing a condition. तापर देखो से कहिछि completion of inchoate instrument. Inchoate instrument कोन हला? What was an inchoate instrument? Inchoate instrument कोन थिला? Page number 127 रो अछि देखो. कहिथिली ता विषय रे. Inchoate instrument माने one person science and derivatives to another person. A paper established according to the law relating to the negotiable instrument for the time being in force in India, either wholly or blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument. So inchoate instrument माने कौन? Instrument left blank instrument left blank for completion according to law in force according to law in force. बुझिपारा ना नहीं लॉ इन फोर्स जहां भी अछि ताहा पे कंप्लीट करिया पे जदी से छाड़ देछि आ से कंप्लीट कर देला दूसरा मटेरियल अल्टरेशन हैला ना नहीं हैला रहेगा ना बुझिपारछ ना पूरा हॉलिडेज मोड रे अछि ना लाइक स्टडी मोड रे अछि ना कोन हॉलिडेज मोड रे अछि फाइन ठीक अछि हम टिके जिनसा डिस्कस करिया टिके टिके करी स्टडी मोड को आसिया एमति नै कि हमर जो गुड नाइट मशीन लाडा हिजबो नथिंग लाइक दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. Making a blank endorsement into full endorsement. Blank full I mean सेटा फिल कर देला सेटा भी मटेरियल अल्टरेशन हैला. Conversion of a bearer check to an order check. This is the sequence of bearer check to an order check. Then se kochi alteration with the party label on the instrument. Consent of party label on the instrument. जे पार्टी लायबल अछि तार किछि कंसेंट नै गिरी से किछि चेंजेस करूछि. Made for the purpose of correcting mistake. These are the purpose of correcting mistake. Purpose of correcting mistake. Blank endorsement formula. Blank endorsement. Get it out in this good third question. But if I get a material alteration, you will definitely get a big question. Case law answer but bit question answer. It's a small topic. To discuss first questions are important. It down to 3. तापरे किछि no तापरे देखो last topic payment of the instrument on which alteration is not apparent where a promissory note bill of exchange check has been materially altered कौन किछि promissory note bill of exchange of check जहां किछि material alteration हेछि but does not appear to have been so altered or where a check is presented for payment which does not at the time of presentation appear to be crossed or to have had a crossing which has been obliterated payment thereof by a person or banker liable to pay and paying the same according to the apparent tenor thereof at the time of payment and otherwise due shall discharge such person or banker liable to pay and pay the same according to apparent tenor. Reason and apparent tenor
due course. And underline, payment shall not be questioned by reasons having been altered or check crossed. Having been altered or check बुझी पारल तो से अल्टीमेटली गुटे जिंस कहउछि जदी प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एउडा तो चेंज हेछि चेंज हे जेछि कोन चेंज हेछि ना के पेमेंट रिसीव करियो कोन करियो से सब जिंस जा कोन हेछि चेंज हे जेछि तो वंस चेंज हेल कहले एडी कोन हबो ना जेतरो पेमेंट हबो पेमेंट हेबा टाइम रे से को जिंस धरि कि से क्वेश्चन कोइ पाइ कान क्वेश्चन बेसिस की कोडी लेखा हेछि तो मदर देख इनती किछि कोइ पाइबो हैला Okay, seventh number point a doubt achi fine. Alteration with the consent of the party liable on the instrument. This point. अच्छा alteration with the consent of the party liable on the instrument माने कौन ना जो भी instrument रे जे भी liable party अछि liable party माने किए रे जे payment करियो very good payment जे करियो तार किछि changes हला माने ताको पचरी कि जदी किछि consent माने कौन ताको पचरी कि जदी किछि changes करू चंदी तो से केस रे सेडा होछि material alteration. Is it clear? तो मु कोन कहउथिली ना जेतळकू ए पाखरे लिखि दोछि हा whenever changes are made on negotiable instrument but are apparently not visible कि सेवेंथ नंबर पॉइंट स्टिल डाउट अछि फाइन देखो मोडा सॉरी गिरी कहउछि सेटा whenever changes are made on negotiable instrument but are apparently not visible then the person receiving payment shall not question on this basis second point देखो where the check is an electronic image हैला electronic image हमें जानथिलु truncated check रो कांसेप्ट हमको आस्थिला truncated check रो मीनिंग कोन ना जेतळो गुटे चेक टा प्रोसेस हे जोची एग्जैक्टली प्रोसेस हैला पारे जेतळो वंस प्रोसेस हैला तो फिजिकल कॉपी ऑफ द चेक विल नॉट बी अवेलेबल एनीमोर the only thing available would be the truncated check माने कोन electronic image of the check will be available since it available है कोन होबो फर्स्ट जिंस होची से चेक को धरि कि से कोन अलगा प्रोसेसिंग पैसा पेमेंट करिबार क्रेडिट करिबार सब सेडी तार हाथ रे रखले बट जिंस कोन होची जदि ट्रंकेटेड इमेज और नॉर्मल इमेज जदि मैच कर तो से कोन कहयो नै से पतला हिला डाइटिंग करथला लि कहयो ना कोन मैच करिया पे बाध्य ऑब्वियसली बाध्य तो ट्रंकेटेड चेक और ए चेक जदि मैच करनी तो सेटा कोन मटेरियल अल्टरेशन काउंट हबो क्लियर एडी लेखम when there is a difference between truncated check and its electronic image truncated check and its electronic image then it will be the duty of banker to correct it
Last point देखो, any bank or a clearing house which receives a transmitted electronic image of a truncated check shall verify from the party who transmitted the image. Please underline verify from the party who transmitted the image. सुनो सब, verify from the party who transmitted the image that the image so transmitted to it and received by it is exactly same. अच्छा सी जदि अलग इमेज पठि दोचे तो सेटा कार भूल हैला ना, तो सी देखियो कोन जतलो ट्रंकेटेड इमेज इलेक्ट्रॉनिक इमेज मैच करनी बैंकर रो भूल, जदि ट्रंकेटेड इमेज से पठिबो इमेज मैच करनी तो सेटा कार भूल जे पठिछि तार, बुझि पालो तो सेटा कोच एज सिंपल एज दैट. तो 7th नंबर पॉइंट ता जदि का बुझिनी तो प्लीज लिसन अगेन. से कोची alteration with the consent of the party liable on the instrument. ये पॉइंट में ब्रेक सेंटेंस कोची party liable instrument. सेकंडली कोची alteration of the consent नहीं कि कौन alteration करिबार. Alteration रो मीनिंग होची changes. तो से कोची की any changes made with the permission of any changes made with the permission of the payment making party, with the permission of payment making party, any changes made with the permission of payment making party shall be treated as material alteration. Is it clear now? Fine, next point देखो. तो ये देखो, bill of exchange which has been negotiated is at maturity held by the acceptor in his own right. All rights of the action thereon are extinguished. तो से को जन करछि तो जे आगो होल्डर थिला तारा सब किछि राइट जहा भी अछि सेटा एक्सटिंग्विश हे जिवो. एक्सटिंग्विश माने कोन? सीज किंबा एंड चैप्टर एंड हेनी यूनिट एंड हैला. देखो नेक्स्ट ठीक है. देखो बेसिक देखिया एक्सेप्टेंस टे देखिए, नेगोशिएशन काली देखिबा. देखो only certain type of bills require acceptance. Essentials of valid acceptance कोन? It must be written on the bill. The bill must be signed by the drawee or his authorized agent. ये साइन कर रखी drawee साइन कर रखी authorized agent साइन कर रखी. Then the accepted bill is required that is not essential elements written on face. The moho पर पड़ी पड़ा से इसे कौन ऊपर लिखा अच्छी. Then signed by is a drawing के आगे table draw so is a table drawing person, that's the meaning person, drawing or authorized agent. What is the difference between agent and authorized agent? के कोई परियो एजेंट मो पाख घरे रहउची, अथराइज एजेंट तम पड़िसे घरे रहउची. हां ना नहीं को कोन ले कोई परियो ट्राई तो करो. एजेंट और ऑथराइज्ड एजेंट रो बेसिक डिफरेंस कोन? जदि तुम एटा 3 मार्क्स क्वेश्चन सडनली पचार देला, इंस्टीट्यूट को तुम जानि न चिन्ह तुम इंस्टीट्यूट को बुझला जहां भी से पचारि परियो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड ऑथराइज्ड एजेंट को जहां भी ट्राई करो. एनीवन कैन आंसर. पैसा लाउछ ना कोन कहया को
नाइ फोन रे देखि पारियोनी डायरेक्ट को 3 2 1 को कहनी नो फाइन जानिबार इच्छा अछि ना हाँ कुआ तो कुआ कोई आ गया ना क्वेश्चन पचारला आंसर कोई आ तबे का पाई कर एजेंट इज अ पर्सन माने जनरली कार आइडेंटिटी से एजेंट हे पारे ऑथराइज्ड एजेंट माने ही इज जनरली अ परमानेंट पर्सन माने पाखो माने बहुत विश्वस्त लोक हैला तो से कोन ऑथराइज्ड एजेंट हे पारे a particular designation ताको थिबो कि this particular person will carry out the agency function related to a particular task माने मनोर सी जदी चेक एनकैश करिया पे सबले एजेंट हिसाब रे रहछ तो he is authorized to encash the check तार जनरल ड्यूटी टा सेडा अगर रहछ बुझि पाला ना नहीं तो सेडा होछि डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड ऑथराइज्ड एजेंट टास्क ऊपर ये डिवोट करके थिबो माने स्पेसिफिकली असाइन टू दैट पर्टिकुलर टास्क बुझला एक्सेप्टेंस रो मीनिंग देखो एक्सेप्टेंस रो मीनिंग तो मैं जानछो बट से कोन कहूची अ बिल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द ड्रॉई के द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन का ऊपर को पर्सन ऊपर बसी कि तमे ड्रॉ करछो जदी मो ऊपर बसी ड्रॉ करछो सेटा होची के ड्रॉई आफ्टर पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन इट सिग्नेचर पक्यो it either delivers it or gives notice of such acceptance to the holder of the bill or to some person on his behalf का दबो notice टा holder of the bill किंबा some person on his behalf बुझि पालो then से कोची acceptor रो meaning को after the drawee has accepted the bill he is known as the acceptor once acceptor it is the only which requires acceptance however acceptance is not necessary to make a valid if it is not accepted it does not become invalid it only becomes dishonored by non acceptance एतिकी जो जिंस जगह अछि पूरा पूरी इंपोर्टेंट invalid bill ऊपर और इन unaccepted bill ऊपर डिफरेंस अछि माने से कोची invalid bill unaccepted bill invalid bill माने invalid bill माने when a bill does not have essential elements in essential elements कोन देखो मो दीडा होछि प्लीज थर्ड टा कया invalid bill माने कोन इन essential elements को कोटा कोटे प्रेजेंट नथबो तो सेटा invalid bill हे जिवो unaccepted bill माने कोन bill which is not accepted bill which is not accepted बुझिलो तो invalid bill और unaccepted bill रो डिफरेंस टा क्या सेटा कहूछ presentation of acceptance may be excused in the following circumstances हैला when the drawee is dead or insolvent से excuse कर दो छ माने कोन बड़ रीजन छै ना मरियला कोई करेला न कोई मरियला बुझला ना सेटा गोटे बहुत बड़ जिंस insolvent हेला देबाळिया हेला when the drawee is a fictitious person or one incapable of contracting fictitious person माने कोची मो गोटे एमिति लोक आसबो त पाखु तार जार की पूरा तेजस्वी लोक थेबो तार बड़ बड़ आखि थेबो हैला आ से 10 वर्ष रो पूरा लाइक ट्रांस थेबो पूरा एकदम हिमालय जाई पूरा साधु सन्यासी लेथिबो सिमिति गोटे पर्सन आसबो तू ताको दबो जे फिल्म रे डिस्क्राइब करना तो ही इज अ फिक्टिटियस पर्सन आसीबो ना आसीओनी जणानी बुझि पालो ना तो फिक्टिटियस पर्सन ले से केस रे एक्सक्यूज करि परिया when the drawee cannot be found with reasonable efforts से लोक को तमे लाइक फाइंड आउट करिया पे बहुत चेष्टा चले छ बट हे पारोनी when the acceptance has been refused on some other ground से कहउछि ना ना जो कार्तिक मास रे व्रत करछि मु चेक छुयार नै पेपर छुयार नै हला से जदी किछि ग्राउंड्स कहि दोछ कि आई कांट एक्सेप्ट ऑन दिस ग्राउंड्स तो से केस रे भी एटा कोन एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सक्यूज्ड तो एटा तुमको गोटे कोन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हे पारिबो देयर आर चांसेस bills in sets माने कोन जदी केते उडे काठाडी बिल्स तमे दोछ गुटे बिल दीडा बिल नै एते काठाडी जदी दोछ
The acceptance is required to be put on one part only. When the drawing signs his acceptance of two or more parts, he may be liable each of them respectively. माने total जेतरो सेट दोजो तमे इंडिविजुअली गुटे गुटे साइन पकेले हबनी. टोटल कठडा को धरि गुटे सिग्नेचर पकेर अछि. माने पूरा एम्ति रोटेट करिकरी you have to sign on your behalf. गुटे गुटे जिंस को लाइक सिग्नेचर करले you will be liable. सेडा गुटे रॉन्ग जिंस हे जिवो. इजी जिंस से कहूची ना तमे कह ना ना गुटे गुटे बिल रे साइन पकेले हबो. When the presentation for acceptance is necessary, when the bill is payable at given time after acceptance or after sight, केबे से कहूची presentation for acceptance necessary माने कोन से कहूची जे तमे सतर से थिबार अछि एक्सेप्ट करला तमे सतर से थिबार अछि को केस रे एमते होची. फर्स्ट से कहूची when bill is payable at given time or after sight हैला टाइम पीरियड से कहि दीची 3 मास परे जो तुम आगुडू कहूची तो तुम जिबा दरकार ना. सडनली कहले सिना तमे जाई पारियोनी. आगुडू कहले तो तुम जिबा दरकार. से कोन कहूची गिवन टाइम परे नले तमे जेतोळ आसबो मु सेतोळा देबी ओली जदी से कहूची तो तमे जिबा बाध्य ना. सेकंड कोन कहूची expressly stipulates that it shall be presented for acceptance before presented for payment. सेडी लेखाई छि कि तमे आसी कि एक्सेप्ट करला पर एगा पेमेंट हबो. एक्सप्रेसली स्टिपुलेट हिच एक्सप्रेसली मेंशन हिच कोन हिच एक्सप्रेसली मेंशन हिच देन तमे बात कहि सेडी थिबाउ पड़ो. But the bill is made payable at a place other than place of residence or business of the drawee. कोडी होची payable at place other than place of residence or business. Business place किंबा place of residence न थेगे आउ कोडी जदी पेमेंट होची आउ कोडी जदी पेएबल होची तो तमे रहया बाध्य सेतरे मेंशन हिथिबो ऑलरेडी. बुझी पालो. टाइप्स देखो टाइप्स में से कहूची जनरल एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जनरल एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जनरल माने an acceptance is strictly general when the drawee accepts the bill without qualification. Qualification माने without any conditions. किछि conditions न लगे कि जदी डायरेक्टली नहीं जोच without imposing माने कोन एटा होची imposing माने किछि conditions ले रहा without imposing conditions. आउ एटा कोन conditions थे obviously. If the acceptance is not absolute, the holder may treat the bill as dishonored by non-acceptance. बुझी पालो. जदी से किछि जनरल एक्सेप्टेंस हैला ना एक्सेप्ट करबो और जदी से किछि कंडीशंस ले डाउन कर दोची त हमटा कोन डिसऑनर ट्रीट करि पारे. बट एडी कोन कोची क्वालिफिकेशन माने accepts after imposing conditions. Accepts after imposing conditions. देखो छानो चना टॉपिक इरा अछि. Circumstances indicating qualified acceptance. It's a very important topic. kind of question तबरे आसीमो. को केस रे तमर qualified acceptance हेइ छै तमे कहि पारि. In which cases can you say that? Where it undertakes the payment on happening of an event then stated. Please underline happening of an event. से कोन कोची जदी 3 दिन कंटीन्यूअसली वर्षा हला देन तमे कोन करियो देन तमे से जिंसटा एक्सेप्ट करि परियो. तो से कोन करछि एडी गोटे इवेंट स्पेसिफाई कर दोछ जेतोलो 3 दिन कंटीन्यूअसली वर्षा हबो सेतोलो मु एक्सेप्ट करबी. सो देयर इज एन अंडरलाइंग कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग योर चेक. तो एटा कोन हला क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हला. सेकंड कोन where it undertakes payment of part only of the sum ordered to be paid. Please understand part only of the sum ordered to be paid. जहां भी पूरा पूरी sum अछि से sum रो किछि part ना खाली payment हे पाछ खाली part payment हे पाछ. Where it undertakes the payment of at a specified place of his choice or not otherwise or else. से कुछ जो place कहबी तो सेडी आसी कलेक्ट करू नले मु देबे. तो एटा भी कोन हला क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हला. से जदी कहि थांदा जदी जोडी हे पारे हम सेडी मिसिबा नले मु जोडी कहि सेडी आसबो तो एटा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नै. बट जदी से कहूची मु जोडी कहि सेडी आगा जिबा तो एटा होची कोन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. Where it undertakes the payment at a time other than at which under the order it would be legally due. Underline करो time other than when it would be legally due. Legal due के अगर से कहूची कि मु जोडी न पैसा देना मतलब पैसा दरकार तो कोन हला क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हला. Where it is not signed by all drawees. जदी समस्त साइन करना
obviously if you question raise करियो कहियो कि मोर मते न पचरी करछ तो it would be somewhat illegal then तो एटा भी qualified acceptance ए जिंस उडा का मन रखिबो you have 5 points here जहां भी क्वेश्चन आसी परिबो तुम it's a very important aspect. Last देखो effect of qualified acceptance. The holder will treat the bill as dishonored due to non-acceptance and after giving due notice of dishonor, sue the drawer and prior end process. से कौन qualified acceptance रे कौन कर पारे? Qualified acceptance case रे कौन कर पारे? मैं treat the bill as dishonored number 1. First कौन कर पारे? Dishonored पीछे क्या कर पारे? And after giving due notice, sue the drawer. Second thing कौन कर पारे? Notice देगी तापरे case notice देगी तापरे case कर पारे. तापर से कहूची if he accepts a qualified acceptance, all prior parties whose consent is not obtained are discharged as against the holder and those deriving title from it. Please underline जल्दी से accept कर दोची तो कौन हो consent जल्दी obtain करनी discharge की जी holder या मैं कह पारी मतलब कौन कहूची जल्दी करे consent नहीं गिरी qualified acceptance accept कर दोची तो जो पर्सन कहची कि मोर आ किछि मो दाई नहीं तो से पर्सन रो कोन सेही तार ट्रायबिलिटी उडा को डिस्चार्ज हे क्लियर एग्जांपल गुडा को निजे देखिबो नेक्स्ट क्लास रे विल कंटिन्यू विथ नेगोशिएशन थैंक यू सो मच